Good evening, very good evening, very good evening, everyone. All clear? Now clear? Sound clear? सब सुबुची ठीक ठाक? ठीक अच्छी? ओके. केमती अछन समस्ते? How are you all? केमती अछन? ठंडा केमती होची कोन? शीत होची? ठंडा शीत होची ना होनी? तो बहुत ठंडा होची. प्रबल ठंडा. कटक नेमाल ओके. अन्य माने? अदर्स? हाँ कटक सीडीए भी बहुत ठंडा होची एठी. प्रबल ठंडा होची एठी. What about you? Your region? ठंडा होची बहुत ठंडा. Now 20th December to 20th January this period एको नॉर्थ इंडिया रे स्पेशली काश्मीर रे चेलिक आइलैंड बोली बोधे कहा जाए मोर जति मन अछि कल्चरल नेम तो बहुत अधिक ठंडा हुए समर से केबे कहली 20th December to 20th January very heavy cold हो ठीक अछि ना आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि एक्सटर्नल सेक्टर लास्ट क्लास हमें कोन डिस्कस करथले पियो कोन पढथले लास्ट क्लास रे व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन लास्ट क्लास आज देखियो हमें एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड ना एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड कहले हमें कोन बुझुचे एक्सटर्नल सेक्टर कहले कोन बुझे गोटे छोटो जिनस बुझेबी ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी ठीक है बुझियो चेष्टा करिवे when your country allows external transaction you are sending something to foreign countries and you are receiving something from foreign countries बाहर को जोटा पठौजो ताको कह जाय एक्सपोर्ट बाहर जोटा हमें आम कंट्री को आणुचे ताको कह जाय इंपोर्ट हैला गोटे कहली कोन ना एक्सपोर्ट आ गोटे कहली इंपोर्ट one is export another one is import so when you allow this when your country allows this is called closed economy that is called closed economy the closed economy and sorry ulta when you don't allow the economy when the economy doesn't allow export import when you allow this is called open economy एठी जतरा में अलाउ कले आको कहले कोन ना ओपन इकोनॉमी बुझियला जतरा में अलाउ कले तो कहले हमें ओपन इकोनॉमी सो external trade is allowed कौन कहले external trade is allowed it means sending to foreign countries export receiving from foreign countries that is import for example India is the net exporter of fruits and vegetables fresh fruits and vegetables कौन कहले India is the net exporter of fresh fruits and vegetables Indian mango Indian onion Indian potato tomato they have a very huge demand in the international market Indian onion na demand Middle East country बहुत अधिक even Indian fruits mango grapes orange very good demand in the international market simultaneously we import the a product गुडा को where we have more production we export to foreign countries जोटी हमर प्रोडक्शन अधिक आमे एक्सपोर्ट करछे फॉरेन कंट्री जोटी हमर प्रोडक्शन कम फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स केमिकल्स दैट इंपोर्ट चाइना रो आमे इंपोर्ट करछे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स and simultaneously मते के कहबे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रे व्हाट इज इंडिया स्टैंड वी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और वी इंपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आमे कोन करछे आमे एक्सपोर्ट करूछे ना इंपोर्ट करूछे व्हाट इज इंडिया स्टैंड फिश फिश रे आमे कोन करूछे माछ चिंगुडी प्रॉन क्रैब कंकड़ा ये सब आमे एक्सपोर्ट करूछे ना ये सब आमे इंपोर्ट करूछे व्हाट इज द स्टैंड नाउ एक्सपोर्ट इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस so India is known as back office of the world please remember India is called back office of world kahi ki kha jaउची याकू back office of world आपको back office of world बोले हमें कहेंगे कहूचे की कहबे
Now, because of IT and ITES sector, because of IT and ITES sector, आम याकू export करते. India is a net exporter. Top companies, India top companies are there like TCS, Tata Consultancy Service, Infosys, Wipro, HCL, Cognizant, many are working in India. एगुड़ा सब Indian company. एगुड़ा सब Indian company देखो. So that is why it is called back office of world. IT and ITES sector. एटा को sector आसुछ ना एटा service रे आसुछ. एटा को sector आसुछ service sector. ना केतरा sector of economy आमे कहितले पूर्वरु पढितली. Primary, secondary and tertiary. मते को primary sector रे कोन आसे? और primary रे आमे कोन export करूचे? Then secondary आमे export करूचे ना import करूचे. Then is tertiary. Then is tertiary. Primary रे कोन करूचे आमे? Primary sector रे कोन आसे? Agriculture and allied agriculture आसे ना primary. What comes in primary? Agriculture and allied agriculture. Agriculture plus allied. ताले आमे एटी कोन export करूचे? एटी आमे कोन export करूचे to foreign countries? मु कहि सारछि already. Indian onion, tomato, potato, fruits, vegetables, flowers, Indian flowers, ये सब हमें एक्सपोर्ट करछे फॉरेन कंट्री. हाँ कि नहीं? इंडियन हनी, ये सब हमें एक्सपोर्ट करछे फॉरेन कंट्री. नाउ सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट की कहिबे? यस, राइस भी करूछे. राइस सेकेंडरी सेक्टर को सेक्टर को हमें कहूचे सेकेंडरी सेक्टर बोली. व्हिच सेक्टर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर? इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग. नाउ एठी हमें एक्सपोर्ट करूचे ना इंपोर्ट करूचे? इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग. एठी हमें एक्सपोर्ट करूचे ना इंपोर्ट करूचे? एठी मोस्टली इंडिया इंपोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, machines, instruments and instruments इंडिया कौन करछि ना? इंडिया इंपोर्ट्स. एठी हमर एडवांटेजेस एते अधिक नाही. ना एक्सपोर्ट करूचे. some MSME products are exported. some MSME products they are exported. ना उठला टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर रे कोन आसिला? कहि चले टर्शियरी सेक्टर आसिला कि ना सर्विस. टर्शियरी सेक्टर रे कि आसिला ना सर्विस सेक्टर. ना सर्विस सेक्टर कंडीशन में कोन? को सर्विस सेक्टर रे हमें कोन एक्सपोर्ट करूचे? सर्विस सेक्टर. नो सर्विस रे एक्सपोर्ट करूचे कि नहीं? मु कहली इंडिया इज अ जायंट इन आईटी एंड आईटीएस प्रोडक्ट्स. इंडिया इज अ जायंट इन आईटी एंड आईटीएस प्रोडक्ट्स, राइट? यस.
आईटी सर्विसेज आम एक्सपोर्ट कर ना आउ गोटे सेक्टर अच्छे मुझे कहि मत को एटा को सेक्टर आसो टूरिज्म टूरिज्म टा कोथरे आसीबो प्राइमरी सेकेंडरी ना टर्शियरी एंड टूरिज्म सेक्टर इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट टूरिज्म टा कोथरे आसीबो मते को प्राइमरी सेकेंडरी ना टर्शियरी प्रशांत कौन कहूछ जीडीपी ग्रोथ ऑफ रिसेंट इयर्स क्लास ऑलरेडी तो जीडीपी पर बहुत क्लास कर सारे प्रशांत ऑलरेडी बहुत क्लास कर सारे मतलब को एक्सपोर्ट सॉरी टूरिज्म टा को सेक्टर रे आसीबो टूरिज्म कम्स अंडर एक्सपोर्ट यस इंटेंजिबल आउटपुट एक्सपोर्ट ना मु कहि पर टूरिज्म हेले हमें कोन आउची ना एक्सपोर्ट कले हमें डॉलर कमाउचे फॉरेन करेंसी कमाउचे तो टूरिज्म होची टूरिज्म माने इंडिया को जेतबेले टूरिस्ट माने आसुचंती हमें एटी कोन कमाउचे ना फॉरेन करेंसी कमाउने पर अर्निंग इंडिया ऑन्स वी ऑन फॉरेन करेंसी मु कहि परिबी सो टूरिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट कहि परिबी टूरिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट कहि परिबी हाँ वर्षा यूट्यूब रे लाइव क्लास डेली होची 9 ରୁ 10 टा लास्ट वीक मु क्लास करथिली पूरा ए वीक रे मध्ये हमर क्लास चली छी है सो इट इज मु कहि परिबी टूरिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट यस और नो टूरिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट कहि परिबी यस और नो yes it is equivalent to export maybe no कहीं पियो because export रे कौन हुए export रे तुम्हें कौन ऑन करछो फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी एक्सपोर्ट कले हमें कौन मिलुछ हम when you export something from India to foreign country what do you get or what do you receive कौन पाउछ एक्सपोर्ट कले पाउछ फॉरेन करेंसी ना ताले टूरिज्म आसिले बा टूरिज्म हेले बा टूरिस्ट आसिले इंडिया को फॉरेन करेंसी ऑन करछे कि नहीं एक्सपोर्ट रो अर्थ होची इंडिया रु फॉरेन कंट्री को किछि पठेबा तो मैंगो प्रोडक्ट होची मैंगो आसिला एबे ग्रेप्स टाइम पीरियड आसीगला ठंडा जनवरी रु ग्रेप्स एक्सपोर्ट हो फॉरेन कंट्रीज वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ग्रेप्स तो कहि परिबे एबे कहि परिबे टूरिज्म इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट गॉट इट गुड ताले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी गला हमें देखिले कोड कोन होची नो एक्सटर्नल सेक्टर हमें बेसिकली कोन पढुचे external sector is all about export and import of what goods and services export रो अर्थ भारत रु बाहर को पठेइबा that is export import रो अर्थ कोन बाहर भारत को आनिबा that is import बुझिला so export और import रे the study of export and import is called external sector को कहारो ना goods services बा financial capital ताले को प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करबा ना वेयर यू हैव एन एडवांटेजेस माने मोर प्रोडक्शन
advantages माने कोन मु कहबी where there is more production and import in case of shortage जोटी less production बा जोटी shortage अछि कोन कहली बा जोटी shortage अछि हम सेठी इंडिया को तो हम इंपोर्ट करिया बुझिला import कोन और export कोन what happens in export and what happens in import clear next financial system sorry एटा भूल पड़े हां नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा ठीक है बुझिबे एटी ध्यान देकी केतरा पॉइंट कहबी फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट कोन फर्स्ट डिस्कस करिया हमें व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट balance of payment कौन है? It is a systematic record of all economic transactions with the outside world. कौन बोले systematic record of all transactions कहाँ सहित? The systematic record of all transactions with outside world. ताको हमें कहते हैं balance of payment. Simple in a year. All transaction means government transaction plus private transaction, and it is a double entry bookkeeping. What is double entry bookkeeping? Double entry bookkeeping कौन? सिंपल एग्जांपल दोची बुझ मु मो घरे कोन कली गोटे खाता कली जो खाता रे मु दीटा कलम कर दिली गोटे साइड कर दिली क्रेडिट गोटे साइड कर दिली डेबिट क्रेडिट माने जहां आसीला डेबिट माने घर जहां गला बुझेला मन कर मु मार्केट को गली 500 टंका रो जिंस किनी के आनिली वेजिटेबल्स ताले 500 टंका क्रेडिट रे लिखिबे ना डेबिट रे लिखिबे ठीक है बुझो चेष्टा करिवे 500 रुपीस कोन कली मु 500 रुपीस गली मार्केट को गली किनी के आनिली यदि मार्केट में 500 टंकार जिनस किनिक आनिली ताले सेटा को मो क्रेडिट साइड रे लिखिबी ना डेबिट साइड रे लिखिबी 500 टंका डेबिट हैला इद लिखिबी 500 रुपीस डेबिट 500 टंका डेबिट हैला ना जिनस तो किनिक आनिली ना एटी कोन खाली 500 टंका डेबिट हेछि कि ये 500 टंका बदल रे मो घरु किछ ना किछ जिनस आसे मन कर वेजिटेबल्स आसी तो वेजिटेबल टा मु लिखली क्रेडिट साइड सो क्रेडिट हैला वेजिटेबल एवं डेबिट हैला केते ना 500 टंका हैला तो दी थर एंट्री ला वन एंट्री डबल एंट्री मींस वन एंट्री फॉर क्रेडिट एंड वन एंट्री फॉर डेबिट वन एंट्री फॉर क्रेडिट एंड वन एंट्री फॉर डेबिट वन एंट्री फॉर क्रेडिट एंड वन एंट्री फॉर डेबिट बुझेला सब प्रैक्टिस हो वर्षा व्यस्त हो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो एवरीथिंग विल प्रैक्टिस डोंट वरी ताले बुझेला को डबल एंट्री बुक कीपिंग कहीं कह जे वन एंट्री फॉर क्रेडिट एंड वन एंट्री फॉर डेबिट दैट इज इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग तापर बेसिक करंट अकाउंट ना करंट अकाउंट कोन जेते हमर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन अछि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मींस विथ आउटसाइड वर्ल्ड अदर कंट्री मानक सहित हमर ट्रांजैक्शन जहां भी अछि ये सब ट्रांजैक्शन गुडा को दी भाग रे डिवाइड करा जाय आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कोन कहले आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बुझिला एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन को दी भाग रे डिवाइड करा जाय आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल ना करंट और कैपिटल कोन करंट अकाउंट सिंगल टाइम वन वे ट्रांजैक्शन मु गोटे दीटा क्लास बजेट क्लास पूर्व पढ़ाइतिली माने अछि बजेट क्लास रु पढ़ाइतिली हैला बजेट क्लास रे मु कहितिली वन वे ट्रांजैक्शन कोन आ टू वे ट्रांजैक्शन कोन माने अछि कि नै So ये कुछ one way transaction जदि हुए single time and one way transaction they are recorded in current account. So receipt or payment happens only once. For example, let's say I am a mango exporter. I do export mango to USA. मु USA mango export कली गोटे थर 50 केजी mango export कर देली ता बदल रे मु किछि पैसा पाइ गली over transaction over. So transaction here happened only once. So when person exports good, he gives goods and receives money, transaction comes to an end. So this transaction is a current account transaction. ताले बुझिला current account transaction कोन and the transactions which happen only once जोडा केवल थरे होती ताको हम कहले current account. No current account transaction ने बा current account रे चारिटा जिंस हम कहबी export import trade balance invisible ठीक है देखो एटा कोन लिखिले export import trade balance आउ invisible
I will discuss one by one. First देखिए export. Export रो अर्थ कौन? Export. Export रो अर्थ होची export means receipts against export of merchandise goods. Export रे हमें कौन लिखछे ना export means receipts against export of merchandised goods to other countries. बुझिला import only goods. Only goods, services are not included. Remember, export under रे services आसेनी. Export under रे कौन आसुची ना only goods, services are not included. कौन कहली services are not included. Now import रे कौन ना आमे जहाँ import कले foreign country रू कौन import कले ना only goods आमे जहाँ import कले एवं ता ପାଇଁ जो payment कले. So import payment for import of merchandise goods from other countries. Payment from import of services not included here. Remember, service एठी include होनी. कौन services are not included. हैला payment for import of merchandise goods included only. Now এটা বুঝিলা export receipt কোন import কোন export কোন import কোন বুঝিলে কি নাই বা export receipts and import receipts clear. What is export receipt and what is import receipt? Export receipt और import receipt बुझिला कि नहीं मते कोन. Got it? Export receipt and import receipt. Now ये कुछ या भीतर difference export receipt minus import receipt. देखो export receipts minus import receipts is called as trade balance. ट्रेड बैलेंस कौन ना एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट रिसीट को हमें कहूचे ट्रेड बैलेंस. बुझिला एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट रिसीट को हमें कहूचे कौन ना ट्रेड बैलेंस. सो जेतोले एटा पॉजिटिव हुए ए ट्रेड बैलेंस ता ताको कहा जाय दैट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. जेतोले नेगेटिव हुए तो कहा जाय अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस. क्लियर व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस बुझी गला तीनटा कथा. एक्सपोर्ट रे एक्सपोर्ट कला पर जहाँ रिसीट मिलला इंपोर्ट रे इंपोर्ट हैला पर जहाँ रिसीट हैला आ गोटेला ट्रेड बैलेंस कोन कहि. तो नेक्स्ट इज इनविजिबल. इनविजिबल देखछे कोन ना सर्विस इनकम और ट्रांसफर. इनविजिबल कोन देखछे सर्विस इनकम ट्रांसफर एगुडा आसीबे इनविजिबल भीतर. इनविजिबल माने जोडा को हमें देखि पारुने गुड्स गला गोटे आउट रहला सर्विस. सो इनविजिबल सर्विस प्लस इनकम प्लस ट्रांसफर ये तीनटा यदि हमें ऐड कर दोचे ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल. ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल जदि हम ऐड कर दोचे तांते करंट अकाउंट बैलेंस. बुझिला व्हाट इज करंट अकाउंट बैलेंस? बुझिला करंट अकाउंट बैलेंस कोन?
हैला बुझी गला ताले ताले एठी हमें कोन देखिले एठी हमें कोन ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल सेटा को हमें कहूचे करेंट अकाउंट बैलेंस बुझिला व्हाट इज करेंट अकाउंट बैलेंस गला नेक्स्ट ला कैपिटल अकाउंट ना वन वे ट्रांजैक्शन गुडा को अकाउंट रहिला मते खाली कहि देले टिके रिकॉल कर दोन जहा हम कहली करेंट करेंट अकाउंट टा वन वे ना टू वे ट्रांजैक्शन क्विक जल्दी कहिबे करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन टा वन वे ना टू वे करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वन वे और टू वे ताले करेंट अकाउंट रे कोन कोन आसिला करेंट अकाउंट रे को फैक्टर रहिला हम ताको कहले कोन रहिला हम ताको करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहले को फैक्टर रहिला हम ताको कहले करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इंडिविजुअल बहुत बढ़िया वेरी गुड पीहू एंड शिवांगी ताले ट्रेड बैलेंस कोन व्हाट इज ट्रेड बैलेंस बीट बाय बीट बुझौछ तापर आउ जेंति डाउट न रहे व्हाट इज ट्रेड बैलेंस कोन मत टिके कहबे ट्रेड बैलेंस कोन व्हाट इज ट्रेड बैलेंस ट्रेड बैलेंस कोन व्हाट इज ट्रेड बैलेंस केमती बाहर करछो ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या तो ट्रेड बैलेंस केमती बाहर करछो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट रिसीट वेरी गुड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गला तापर हम आछा कैपिटल अकाउंट रे टू वे ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड कोन कहले कैपिटल अकाउंट रे टू वे ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड पेड मनी कैन बी रिकवर्ड थ्रू पीरियोडिकल इनकम कोन कहले पेड मनी कैन बी रिकवर्ड थ्रू पीरियोडिकल इनकम एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट टू फॉरेन कंट्रीज एग्जांपल कोन कैपिटल अकाउंट रे मन कर मु कहली क्वेश्चन बुझियटी मन कर हम गोटे लोन आनीचे लोन रो इंटरेस्ट पेमेंट करबा एटा वन वे ट्रांजैक्शन ना मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू वे ट्रांजैक्शन थरे आसिला पुनी एमती चलिबो दउथिबा लोन आनीचे लोन रो इंटरेस्ट पेमेंट हबो एटा वन वे और टू वे ट्रांजैक्शन क्विक रेस्पॉन्स प्लीज दिस इज वन वे ट्रांजैक्शन और टू वे ट्रांजैक्शन लोन आसिला पुनी हम इंटरेस्ट पेमेंट करि चले तापर वन वे ले स्टॉप हो जाता गोटे थर बंद हो बट ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू वे ट्रांजैक्शन ना मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो कैपिटल आसीबो ना करेंट अकाउंट रे आसीबो ताले एटा करेंट अकाउंट रे आसीबो ना कैपिटल अकाउंट रे आसीबो कोडी आसीबो कैपिटल रे आसीबो ना करेंट रे आसीबो कैपिटल सरला कथा कैपिटल अकाउंट ताले एथरे कोन आसीबो कैपिटल अकाउंट रे हम टिके देखिबा फर्स्ट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस रो अर्थ होची ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑफिशियल बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन्स बायलैटरल लोन किया और मल्टीलैटरल लोन किए मु कहितली पूर्व मन कर यूएसए देची इंडिया को ताले एटा कोन हला यूएसए इंडिया को देले एटा हला बायलैटरल मु कहि यूके देची इंडिया को एटा हला कोन एटा हला बायलैटरल ना मल्टीलैटरल लोन किए मल्टीलैटरल लोन किए ना मु कहबी
मनकर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एडीबी एडीबी एमाने देइचंती काकू ना इंडिया मनकर एमाने इंडिया को देइचंती इटा ला करना मल्टीलैटरल लोन बुझिला बुझिला कि नहीं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एडीबी जदि इंडिया को देइचंती ताको हम कहले कोन मल्टीलैटरल लोन क्लियर देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नाउ एटा हला कहा को एटा गवर्नमेंट को ना प्राइवेट को ए जो ऑफिशियल मींस कोन ऑफिशियल मींस गवर्नमेंट ए जो लोन गुडा किए आनी छी ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन किए आनी छी दिस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स आर रिसीव्ड बाय whom bilateral and multilateral loans are received by the government. Now private sector can Indian private this is Indian government. Now same way Indian government जोटा आनिला जति कि लोन पाइला bilateral व multilateral loan कहले देखो in the same way can the private sector get loans in the same way can private sector get loans private sector loan पाई परिबे की can the private sector get loans private sector loan पाई परिबे की yes. So loan transactions by commercial enterprises is external commercial borrowing. Exactly same जिनसा but it नौची किए loan ना loan नौची private sector. कौन कहली exactly same जिनसा but it loan नौची किए ना loan नौची private sector. बुझेला तक कहला हमें कौन that is called external commercial borrowing. कौन कहले देखो it is called external commercial borrowing. ना सेटा गवर्नमेंट नौथुला एठी किए नेला ना एठी नेला प्राइवेट सेक्टर बुझे गला सो कमर्शियल लोन्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन बायर क्रेडिट सप्लायर क्रेडिट ये सब होई पारे माने कर गोटे कोड आनिच फॉरेन कंट्री रु तुमे किछि इंपोर्ट कल ताको कहलो मु एबे पैसा देबिनी परे देबी क्रेडिट रे दियो तो सेहीटी कांसेप्ट आसे बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट ताले एठी देखले हम कोन ना ECB by external commercial borrowing. Clear? What is external commercial borrowing? ECB कौन बुझीला ना नहीं ECB कौन बुझिलो कि नहीं को ECB रे कौन हुए ना एटी थाए गोटे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन माने एंड यूज रेस्ट्रिक्शन कौन तुम मते कहलो सर मते पैसा नहीं मो पाखरे मते 1000 टका दियन मु कहली मु 1000 टका देबी बट विथ द कंडीशन दैट यू यूज दैट 1000 रुपीस फॉर बुक परचेस आइदर बुक परचेस रे यूज करो बा किछि फॉर्म बाहर जदी फॉर्म फिल अप रे यूज करो ता व्यतीत आउ जदी कोठी यूज करिवो ताले मु देबिनी तुम कहलो सर मु रेस्टोरेंट रे खाइबी मध्य मु कहली मु देबिनी सो दैट इज कॉल्ड एंड यूज रेस्ट्रिक्शन इट मींस वेयर यू आर यूजिंग दैट अमाउंट से पैसा टाको कोठी यूज करछो ता कोजे कोन ना एंड यूज रेस्ट्रिक्शन बुझियला एंड यूज रेस्ट्रिक्शन कोन सो ECB ऊपर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऊपर एंड यूज रेस्ट्रिक्शन लागे कोठी यूज करिवे कोठी यूज करि परिबेनी एई जगह रे यूज करि परिबे एई जगह रे यूज करि परिबे नाही बुझियला नेक्स्ट ये गला ABC इज शॉर्ट term trade credit short term credit now these are short term credit for less than 3 years now loans for less than 3 years that is short term credit or short term debt short term credit বা short term debt कहा जाए then the next is banking capital then the next is banking capital now banking capital कौन what is banking capital simple कथा banking capital कौन ना दीटा जिन foreign asset of commercial bank and foreign liability of commercial bank foreign asset and liabilities of commercial bank now asset कौन और liability कौन
कौन कहले एसेट कौन और लायबिलिटी कौन व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी कि कहे मते मु कहली गोटे एग्जांपल नउछि बैंक एसेट रो फॉर डेफिनेशन मन रखो व्हिच जनरेट्स इनकम जे इनकम जनरेट करे ताको कोनती एसेट हैला नाउ लायबिलिटी कौन which needs return ये रिटर्न जहाँ को दबाक पड़े सेटा ला लायबिलिटी मत को बैंक रो जो डिपॉजिट करूचो सेटा बैंक रो एसेट ना लायबिलिटी बैंक रे जो डिपॉजिट करूचो दैट इज एसेट ऑफ बैंक और दैट इज लायबिलिटी ऑफ बैंक एग्जांपल ने भी बैंक deposits are liability for the bank because bank has to return बैंक को रिटर्न दबाक पड़ियो सो बैंक डिपॉजिट एठी आसीबे डिपॉजिट्स ना हम कभी लोन आसीबे कोथरे ना एसेट बैंक रो लोन टा कोन बैंक जो लोन देइछि हमकु सेटा एसेट ना लायबिलिटी जो लोन देइछि बैंक से पैसा पाउछि ना इनकम जनरेट करछि जोटा को यूज करी इनकम जनरेट करि परिबो सेटा तुम पई एसेट कोन कहली जोटा को यूज करी इनकम जनरेट करि परिबो सेटा हला तुम पई एसेट जोटी इनकम जनरेट करि परिबो नाही बा जोटा तुम रिटर्न दबा को पड़िबो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी क्लियर लायबिलिटी कोन आ ये कोन बुझिला लायबिलिटी कोन नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डी गला बैंकिंग कैपिटल ई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये ला कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट दी प्रकार है पर आइदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो और रेंटियर इन्वेस्टमेंट एटा कहले हम करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कहले एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सो एफडीआई टा कौन ना इन्वेस्टमेंट अदर देन स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट other than stock exchange investment other than in stock exchange is called FDI on noila what is FDI the foreign institutions investment karan this is the investment by foreign institutions कोटी ना इन म्यूचुअल फंड पेंशन फंड जेतो एटी फॉरेन इंस्टीट्यूशन मान इन्वेस्टमेंट करे तो कहले हमें पोर्टफोलियो बा रेंटियर पोर्टफोलियो बा रेंटियर लोन लायबिलिटी केम दो लायबिलिटी कहले जोटा रिटर्न दबा को पड़े सेटा लायबिलिटी लोन टा कोन बैंक को रिटर्न दबा को पड़ुची बैंक लोन दे की इंटरेस्ट जनरेट करची इनकम जनरेट करची हैला ई बुझेला फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुझेला क्लियर व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुझेला नेक्स्ट एफ अदर फ्लोज रे कोन आसुची ना डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट जदि किछि एक्सपोर्ट करिचो बाहर को पर सेटा डिले रे आसुची रिसीट बा एरर माने मिसमैच
कोथरे मिसमैच इन बैंकिंग चैनल डाटा एंड कस्टम डाटा वेरी इंपोर्टेंट बुझौची बैंकिंग चैनल एंड कस्टम डाटा जेतबेले एक्सपोर्ट हुए पैसा केमती मिले कहलो फॉरेन करेंसी केमती पाइबो जेतबेले एक्सपोर्ट हुए तुमको फॉरेन करेंसी केमती मिले मन करो मैंगो एक्सपोर्ट कली मु अमेरिका न अमेरिका मते केमती दबो पैसा माने जे मोटू किनिला से पैसा केमती दबो डायरेक्ट मो अकाउंट रे ना केमती अमेरिका रे गोटे इंपोर्टर बसिची मु जाको आंबो देली सी मते पैसाटा केमती दबो पेमेंटा मते केमती दबो मो पैसाटा एनी आंसर मो पैसाटा मते पेमेंट केमती हबो गूगल पे अच्छा जदि गूगल पे करे ताले गोटे प्रॉब्लम अच्छे बुझे दूसरी इलीगल मनी जिते आसूची एटिक इंडिया को यही माध्यम आसी पार मु 50 केजी आंब पठेदेवी सी मते $5000 पठेदेव जिते तार एक्सट्रा पठेया कथा से पठेदेव सेमती हेले डायरेक्ट ट्रांजैक्शन एटी हुएनी प्लीज रिमेंबर यदि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हम प्रॉब्लम कौन हम मत जब से डायरेक्टली पठेब ताले से अधिक पठेई पारे एथि पई बैंक इन्वॉल्व हुए मन कर तुम पठाउच मैंगो एक्सपोर्ट करूच मैंगो एक्सपोर्ट एटा को कोड पठेबो गोटे शिप रे पठेबो माने गोटे पोर्ट रु पठेबो तो ये पोर्ट रे कस्टम डिपार्टमेंट थाए कस्टम डिपार्टमेंट रो एटी थिबे लोक जे तुमर वेरीफाई करिवे केते टंकार प्रोडक्ट कला तापर तुम पाखरे गोटे बिल कस्टम डाटा मिला बिल मिलला तुम एतिक टंका ताकू रेज करछ मन कर $5000 बिल तुमको मिलला तुम ये बिल आनिबो बिल आनी के दबो काहा को ना बैंक बुझेला तुम आनी तुम बैंक पाखरे डिपोजिट करिवो वर्तमान इंपोर्टर जी इंपोर्टर कोठी बसिची इंपोर्टर यूएसए रे बसची सी कोन कला ना सी तुम पेमेंट तुम बैंक को करिवो वर्तमान बैंक एठी मीडिएटर हे गला सी जेति की टंका पेमेंट ये कला केते $5000 ये देला केते $5000 बैंक ए डाटा को मैच करेवो कस्टम हाउस डाटा केते एवं इंपोर्टर केते टंका मागिची इंपोर्टर केते टंका पठेइची मैच करला पर यदि मैच हो तुमको पैसा आसीबो अदरवाइज तुमको पैसा आसीबो ताले कोन हबो एडी ई केस गुडा सब ईडी अंडर आसे पीएमएलए एक्ट गोटे अछि जानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रात्रि सोइथिबे सकाळु ईडी वाला आसी उठेकी नै जे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोन कहली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय ना सुनिथिबे समस्त मागुची प्रवर्तन निर्देशालय ना समस्त सुनिथिबे से आसी अरेस्ट करनो तो मनी लॉन्ड्रिंग हो पारे एथिपाई ई डाटा को मैच करा जाए गोटे कस्टम डाटा गवर्नमेंट दी थर डाटा रखुची तुम जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूछ इंडिया बाहर थरे कस्टम माध्यम रे करूची द्वितीय बैंक माध्यम रे करूची हैला तेणु सेमती कहीं करबनी तो ये दीटा डाटा यदि मैच करिगला ठीक अछि तो एथरे बेले बेले मिसमैच हुए एरर तो एई एरर गुडाक बा डिले एक्सपोर्ट रिसीट तुम पठेइछ बहुत दिन पर पैसा मिला ये सब आसीबे कोठी दे विल कम टू अदर फ्लो ए 6टा कथा एटी कहली आउ थरे कहूची कौन कौन कहली आउ थरे कहूची टिके ध्यान देकी सुनिबे मो कथा 6टा पॉइंट एटी कहली कौन कौन ए एक्सटर्नल असिस्टेंस कैपिटल अकाउंट अंडर एक्सटर्नल असिस्टेंस बी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक्सटर्नल असिस्टेंस कहा को गवर्नमेंट जो लोन आनुची आइदर बाइलैटरल और मल्टीलैटरल बी बी इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एटा किए सेठी गवर्नमेंट आनुला एटी की आनुची प्राइवेट सेक्टर आनले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सी शॉर्ट टर्म डेट लेस देन 3 ईयर डेट को कहले शॉर्ट टर्म डेट बैंकिंग कैपिटल फॉरेन एसेट्स ऑफ बैंक और फॉरेन लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब बैंकिंग कैपिटल ई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया रे फॉरेन कंपनी जते इन्वेस्टमेंट करछन फॉरेन कंपनी इंडिया रे इन्वेस्टमेंट केमिति करि परिबो दीटा माध्यम आइदर एफडीआई रे करिवो इन्वेस्टमेंट थ्रू अदर देन स्टॉक एक्सचेंज आ गोटे पोर्टफोलियो बा रेंटियर इन्वेस्टमेंट हो आ गोटे कोन कहले आ गोटे पोर्टफोलियो बा रेंटियर इन्वेस्टमेंट हो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन म्यूचुअल फंड पेंशन एटी करि परिबो लास्ट कहली अदर फ्लो रे डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट आसी पारे बा एरर आसी पारे एरर कोन ना यदि डाटा मिसमैच हेची बिटवीन द कस्टम हाउस एंड द बैंकिंग चैनल डाटा
कस्टम हाउस एवं बैंकिंग चैनल डाटा जदि मिसमैच अछि छटा कथा कहली ए बी सी डी ई एफ तो कैपिटल अकाउंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बुझेला कैपिटल अकाउंट is equals to A, B, C, D, E, F बुझे एटा कहला हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्लियर कैपिटल अकाउंट बैलेंस बुझेला कैपिटल अकाउंट बैलेंस कौन ना डाउट ताले करेंट अकाउंट बैलेंस कौन पढ़ीथिला हमें कौन देखले करेंट अकाउंट बैलेंस रे कौन पढ़ले टिका आगुर मत किए कहयो करेंट व्हाट इज करेंट अकाउंट बैलेंस हां कौन पढ़िले करेंट अकाउंट बैलेंस रे टिके समय पूर्व कोंदु पढ़िले हमें किए कहयो देखियो कार मन अछि करेंट अकाउंट बैलेंस इक्वल्स टू जस्ट अध घंटा आगुर पढ़िली करेंट अकाउंट बैलेंस कौन भूली गला सांग भूली गले केमदे हो ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल वेरी गुड शिवांगी ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल एटा कौन मु पढ़ी सारी नेट इनविजिबल तो ये दीटा को जदि हम ऐड कर दबा करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इट विल गिव यू ओवरऑल बैलेंस it will give you overall balance is equals to current account balance plus capital account balance overall balance कौन बुझेला ना डाउट एती कहि बुझेला ओवरऑल बैलेंस कौन ना नहीं मेसेज एबे आसो जी पिउ तुमरो बुझेला नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट कौन हम देखु ना कहते $1 इक्वल्स टू 90 रुपीस नाउ दिस इज एक्सचेंज रेट केते टंका रे हमकु चेंज होची माने एक्सचेंज करछो करेंसी ठीक है बुझियो मन देख जदि आज अच्छी $1 इक्वल्स टू 90 रुपीस 90 रुपीस काली की जीवो $1 इक्वल्स टू 100 रुपीस ताले एटी रुपी रो वैल्यू बढ़िला ना कमिला आज रुपी 90 टंका अछि डॉलर 90 टंका अछि $1 इक्वल्स टू 90 काली के जीवो 100 ताले कोन हला कमिला ना बढ़िला रुपी रो वैल्यू कमिला ना बढ़िला या पर नी याकु गोटे वीडियो मु करथिली देखिबे डॉलर रो वैल्यू स्ट्रेंथन होउची $1 इक्वल्स टू 90 रुपीस टपिला याकु नी गोटे बढ़िया वीडियो अछि YouTube रे देखिबे प्लेलिस्ट को पळेबे प्लेलिस्ट को बा वीडियो को पळेबे वीडियो सेक्शन तळु तळु जाई के देखिबे अछि करंट अफेयर रे याकु मु करथिली हैला डिक्रीज एठी कोन रुपी रो वैल्यू कमिला ताको अजे दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रुपी रो वैल्यू रिड्यूस हैला कोन कहबी रुपी वैल्यू रिड्यूस हैला दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन हैला नेक्स्ट एप्रिसिएशन जदि वैल्यूटा बढ़े $1 जदि अच्छी आज केते 90 रुपीस काली के गला $1 इक्वल्स टू 80 रुपीस ताले एटी कोन हला रुपी रो वैल्यू बढ़िला रुपी वैल्यू increase that is called appreciation बुझिएला नेक्स्ट devaluation एठी जहा देखुतिले $1 90 रुपीस थिला $1 एबे हे गला 100 रुपीस तुमे कहबो सर एठी तो जहा कहले डेप्रिसिएशन ने अपन डिवैल्यूएशन ने भी सेम कथा कहउछन डिवैल्यूएशन कोन ना $1 90 रुपीस थिला एबे $1 100 रुपीस है तुम कहो सर एप्रिसिएशन ने जहाँ कहले तो एटी रिवैल्यूएशन ने से कहउछन डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन ने तो सेम कथा कहउछन यस सेम ये दीटा मार्केट फोर्स रे होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन एटा हुए केमदी ना एटा मार्केट फोर्स रे होता है मार्केट फोर्स माने इंटरनेशनल मार्केट रे रिक्वायरमेंट ऊपर डिपेंड करके एटा होता है कोटी इंटरनेशनल मार्केट रे रिक्वायरमेंट ऊपर डिपेंड करके एटा होता है नाउ ये डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन किए करे ना दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट करे कौन पाई ना टू बूस्ट एक्सपोर्ट बढ़ेया पाई गवर्नमेंट याकू करता है एक्सपोर्ट बढ़ेया पाई गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करे नाउ डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हैपेंस इन द मार्केट फोर्स मो कथा बुझी पाले ना बुझी पाले
डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मार्केट फोर्स रे हुए, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बाय द गवर्नमेंट बाय द डेलिबरेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इज दिस क्लियर? ये पांचटा कांसेप्ट पूछिएला, एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। इज दिस क्लियर और डाउट? क्विक जल्दी कौन जल्दी कौन समस्त बुझिले? डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताहले फॉरेन ट्रेड ऊपर हमर गोटे बेसिक बा ओवरऑल आईडिया आसी गला। कौन कहली फॉरेन ट्रेड ऊपर समस्त गोटे ओवरऑल आईडिया आसी गला। समस्त जे जन प्रेजेंट अछंती ऑल, यस और नो? यस और नो? यस क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। यदि डाउट रहिला पचार, एनी डाउट? चलिए रिकैप नहीं जो मत कहो, करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू क्विक रेस्पॉन्स। जल्दी जल्दी कहिबे, करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू कौन कहूची ताको? करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस ओवरऑल बैलेंस। वेरी गुड। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट केते प्रकार कहली? बहुत बढ़िया, पीयू, गिरिजा, संतोष, शिवांगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट केते प्रकार? दुई प्रकार कौन कौन? एफडीआई एंड पोर्टफोलियो। वेरी गुड। कौन कहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एफडीआई आउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बुझीगला। बैंक जो लोन टा दउची से लोन टा बैंक रो एसेट ना लायबिलिटी? बैंक जो लोन दउची से लोन टा बैंक रो एसेट ना लायबिलिटी? से लोन टा बैंक रो एसेट। बैंक पाखरे हम जो डिपॉजिट रखी छे दैट डिपॉजिट इट एसेट और लायबिलिटी? करंट अकाउंट वन वे और टू वे ट्रांजैक्शन? Current account is one way or two way transaction? Capital account is one way or two way transaction? Capital account is one way or two way transaction? Next, $1 रो वैल्यू थिला, let's say $1 रो वैल्यू 90 रुपीस थिला एवं बॉडी की $1 रो वैल्यू 100 रुपीस हेगला, ताले एटी एप्रिसिएशन हला ना डिप्रिसिएशन हला? $1 90 थिला, $1 100 हला। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, व्हाट इज दिस? $1 90 ରୁ 100 हला, दिस इज एप्रिसिएशन और दिस इज डिप्रिसिएशन। जो गवर्नमेंट एटा को निजे करेइबो, गवर्नमेंट जो
depreciation karai then that is called, when depreciation, not appreciation, value kamila pra, when depreciation is done by the government, that is called, when depreciation is done by the government then that is called devaluation. Appreciation by the government then that is called revaluation. बुझीला? बुझीला कि नहीं मत कहूँ ताले कौन पढ़िल को आज क्लास, कौन शिखिल आज क्लास रू मत कह क्विक, कौन शिखिल आज क्लास रू ना फॉरेन ट्रेड, कौन शिखिल फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट कौन जानिल, इंपोर्ट कौन जानिल, हैला करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट आउ कैपिटल अकाउंट जानिल, एफडीआई जानिल, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जानिल, देन एक्सचेंज रेट कौन जानिल, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ये सब पॉइंट आमे पढ़े। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ता आगुर कहितली यस ईसीबी जानिल, एक्सटर्नल असिस्टेंस जानिल आउ ईसीबी जानिल। मते कोन भल बुझी होउची ना बुझी होनी, इकोनॉमिक्स कष्ट लागुची आउ, आर यू फाइंडिंग इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नाउ? जति के सेशन मु करि सारलेनी, नाउ ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। ओए मो ठीक अछि, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहि देबी, डोंट वरी, बैंकिंग रे मु कहि देबी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनफैक्ट आरबीआई ऊपर गोटे क्लास आनी, बुझा पडुची, क्लैरिटी आसुची इकोनॉमिक्स रे कि नहीं? So economics is never difficult. So we have a perception economics is difficult. I will make economics easy for you. English टिके टिके बुझियोनी कोन करिया, बुझिया तो पड़िवो, हंगे नहीं, बुझिया तो पड़िवो इंग्लिश, इंग्लिश द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इथ्रु आसीबो क्वेश्चन, लाइटली इजी लागुचे, बहुत बढ़िया थियो। बजेट ऊपर क्लास आनी थी गोटे, आ गोटे आनिबा पुनी, डोंट वरी, जदी डिफिकल्ट लागे बजेट तले आ गोटे क्लास आनिबा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आउ जहा छी पुनी काली डिस्कस करी, आज पई एति। थैंक यू, गुड नाइट। आउ जहा छी काली डिस्कस करबा, गुड नाइट, थैंक यू।